हेलो प्रणाम नमस्कार पंचतत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रागुन तत्व टॉक्स माय ग्रीन पॉडकास्ट. Well, before I move ahead, let me share a beautiful piece of news with all of you. With all your love and listens, the Pragun Tatwa podcast is now listed as one of the top 30 eco-friendly podcasts on the web. And this list is very much available on feedspot.com under the category Eco-Friendly Podcast. Once again, thank you very much Feedspot for selecting and including Green Tatwa podcast in your esteemed list from all over the world. So guys, keep listening and keep inspiring yourself with all the wonderful green living stories shared here on Green Tatwa Podcast. Well, अब मैं अपनी तारीफ की पोटली को थोड़ा सा उठा के साइड पे रखती हूँ और एक तारीफ के काबिल न्यूज बताती हूँ, which I came across just 2 days back, which says trash turns into track. Puzzled? Well, अहमदाबाद के पिराना डंपिंग यार्ड के बारे में ये न्यूज है, which is shaping the future quite literally. This waste is being repurposed into a mammoth infrastructural venture, the 109-kilometer Ahmedabad-Dholera Expressway. And this flagship project was envisioned by PM Narendra Modi and is slated to revolutionize travel between Ahmedabad, Dholera SIR and Bhavnagar. Insiders at the National Highway Authority of India reveal an impressive 20 lakh cubic meter of municipal waste and a staggering 25 lakh cubic meter of fly ash from thermal power stations have been put to use. Along with mud and other construction material, this is molding the expressway. So waste and fly ash, these prove to be resilient layering materials, and this process is significantly reducing waste in Ahmedabad while making room at the Pirana dumping yard situated in the city's prime Narol area. Wow, this is really a wonderful news and I'm glad that this project finally saw the light. Why I'm saying this is because at times eco-friendly projects सोचे तो बहुत जाते हैं but at times वो finalize नहीं हो पाते. And when it comes to eco-friendly living, it comes with the price of being the lonely one in the group, as not all are still convinced with sustainable living lifestyle. People love to talk about climate change and piling garbage, but there are very few who really work on daily changes. People will wipe the tabletop and kitchen slab with tissue papers and harsh chemicals, but will not switch to a simple piece of clothing. But sometimes you are not that lonely and you can even find your major support in your family too. And one such example is of a sister duo better known as Trashy sisters. And today on Green Talks, we have these like-minded sisters, one of the like-minded sisters I must say, with us who are doing their best towards the society by creating awareness for a sustainable living. So, to know more about them and their work, let's welcome Vidhi Adhikari to Green Tatwa Talks. Hey Vidhi, how are you? Hi, can I just say that was really impressive? I am so intimidated right now. Your delivery was awesome. Thank you very much. You deserve it, of course. No, it really was. I would love to become a speaker like that. I tend to have an unfiltered mouth, so I just go blah, blah, blah. But this was very put together and wow, I loved it. Thank you very much. Thanks a lot, Vidhi. Well, guys, before we move ahead, a little bit about them. Vidhi and Preeta Adhikari are two young teenage sisters who have been living an imperfect, low-waste lifestyle for the past few years. And on their Instagram page titled Trashy Sisters, you can find loads of tips on sustainable living, composting, sustainable fashion, and a lot more. They were even featured on the Sunday Standard by the Indian Express and India Today news channel, about which you can even find the pin post on their Instagram. Also, Vidhi and Preeta, the Trashy sisters, have a YouTube channel with the same name,
And there also they have been sharing information about eco-friendly living on a budget, single-use plastic-free living, composting, vegan food, recycling, and a lot of topics. So guys, do visit Trashy Sisters on Instagram as well as YouTube and find your sustainable living choices with them. So Vidhi, आज की बात शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, you are such a teenage bubbly girl. Tell me how you began your plastic free journey and what was your inspiration? This is the first question that everyone asks me, and I always forget how exactly I started with this. But to be very honest, when I was in school, I did know a little bit about like eco-friendly stuff like menstrual cups and everything. I was kind of drawn to it because of the aesthetics. Sundar lagta tha bahut zyada. So when I started with this lifestyle, honestly, it was very much about vanity. I was very much into the aesthetics ki ye bahut sahi lag raha hai. It's going to save me a lot of money. So when I brought my first menstrual cup, I realized how much of an impact I was having, like a carbon footprint I was creating by using my single-use pads and all. That's when I realized that the thing that I'm getting interested in has a lot of potential. So I started exploring other ways to lower my trash and lower my carbon footprint. So it snowballed like that, and that's how we started this page in, I believe, 2018. And initially it was about repurposing all the trash in our homes. Then it became about buying stuff that allows us to make less and less trash. It also became a little bit about being a cruelty free person, having a cruelty free diet and lifestyle, and we explored veganism. So it's just been snowballing into different things as we learn more, as we document more, as we share more, as we blog more. So yeah, that's how it basically started. Wow, that's really wonderful, and I'm sure कि जब पहली बार हम Trashy Sisters के बारे में पढ़ते हैं तो we of course think that there is something that they're turning this trash into a treasure for sure. That's why they are so proudly calling themselves this. And this reminds me of a very beautiful quote. It says that just because you are trash doesn't mean you can't do great things, because it's called garbage can and not a garbage cannot. So there is a lot of potential in garbage and trash also. I think we just need to have that vision. We just need to have that conscious. Yeah, of course. Totally agree. Okay, so tell me एक चीज मुझे, of course, जैसे हम बात कर रहे हैं Trashy Sisters, so is it difficult to stay on the same page with your sister? Because siblings के बारे में हम हमेशा सुनते हैं कि siblings at times opposites होते हैं, they don't agree on the same stuff. So how has it been the journey with your sister on eco-friendly and sustainable living? I mean, when you talk about our daily life, we don't agree on anything. I mean, not agreeing, like I'm a slob and my sister is a neat freak. So we tend to have arguments about that. But when it comes to sustainability, we are kind of on the same page and we have our different roles. So at the moment, she has taken a step back from the page because of work. But every once in a while, I would go to her for ideas, or I would share a video with her that I'm about to upload this. Kuch edits de do. So she would like tweak it. She would ask me to add this voiceover. Isko chipmunk voice kar do. So we have our roles, and she understands that I'm taking the center stage over here for a while. So she just sort of helps me in the back by helping me with the captions or helping me with a little bit of editing. So it works for us. डेली लाइफ में तो होते रहते हैं, जो झगड़े भाई बहनों में जो होते हैं वो तो होता रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू द पेज वी आर सॉर्ट ऑफ इन सिंक, वी आर सॉर्ट ऑफ ऑन द सेम पेज. सो यस, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अस. Wow, that's really great, because I have often seen that parents often marvel at or complain about the vast differences between the offsprings, the examples of contrasting siblings and biblical and fictional and historical. So staying on the same page, why I said so, because eco-friendly living या sustainable choices की जब हम बात करते हैं, it happens with me also. Family बहुत जल्दी आपके साथ agree नहीं करती है, because everyone, like हम किसी को बोलते हैं टिश्यू पेपर मत यूज करो, and they will give you an eye, क्या फर्क पड़ता है, पेपर ही तो है. So I have been through it. So having a sister with the same mind is really a great thing. So Acha, tell me, how has your family received your eco-friendly living? Like both sisters, when you decided to turn your lifestyle changes, छोटे छोटे जो भी आपने लाए, तो how has your family received it?
the same page thing that you talked about. So my sister are on the same page when it comes to this. My family and my sister and I were sort of not, because my parents were like, "Kya hai, कूड़े में हाथ डालती रहती है." And there was a time when I actually got sick by when I was doing all these cleanups. So yeah, they were kind of worried about me also, and they were like, क्यों कर रही है ये, करियर बनाने के टाइम पे कूड़े में हाथ काहे डाल रहे हो? So it was like that. But then eventually they started seeing the traction that we were getting on our page, and they sort of realized the things that I'm doing can have an impact, and it is very, very important for more and more people to do this. तो अब धीरे धीरे the transition that has happened is कि मेरी मम्मी को अब पता है कि मैं खाद बनाती हूँ, तो मम्मी अलग से मेरे लिए compostable सामान रख देती कि इसको खाद में डाल देना, बच्चे खाद बना लेना. Same goes with my father. My father takes like diabetes medication and all. So earlier he used to just like, क्योंकि आदत थी सीधा डस्टबिन में फेंक देते थे. अब क्या हो गया, he would like, if I forget to place a bin, he would be like, अरे बेटा bin कहाँ है, मैं उसमें डाल देता हूँ ना दवाई का पैकेट, क्योंकि आप रिसाइकल करा दोगे. So they sort of acknowledge the things that I am doing. Yeah, so now we are sort of on the same page. Initially it was difficult to convince them, and I totally get it. Everybody has different priorities in their life. किसी का काम होता है, किसी का बच्चे होता है, किसी का कुछ होता है. So trash के बारे में something, it's not a topmost priority for most people, but yeah, they do understand the things, they do understand why I'm doing this now, so they are helpful. So technically we are all on the same page at the moment. We are very lucky to have that kind of thing in our family. Great. I must say kudos for whatever you just shared, that not only Trashy's sister, I must say the Trashy family, and great that you have got this much support, and lots of good Definitely. luck to Trashy's sister's Instagram page and YouTube and all the initiatives which you're carrying. अभी आपने एक बात की cleanups की, that you got sick. What is that means? Are you actively participating in cleanups, and like, or are these any ongoing drives which you keep on doing or something? आपने just zikr किया, I'm just asking. Okay, so the thing is, I have never been part of any like organization that does cleanups, but there is this small alley behind my place that was trashed when a new building was constructed behind us. So completely trashed, and there were many times that we talked to the contractors and the builders to get this cleaned, and they never did. So I thought कि अगर मैं उनको clean करने को बोल रही हूँ तो वो करेंगे क्या? वो कूड़ा उठा के कहीं फेंक देंगे. That's not the solution ना. It's just like removing the trash from your eyes, not from the planet. And somebody else, some animal is gonna eat all of that plastic in that mud and all that congealed mass of trash that we have. So I thought, I'm gonna clean this. So I slowly started to analyze what all different pieces of trash are in this dirty alley, and I started sorting. So basically क्या था, पहले तो मिट्टी था क्योंकि construction था, तो मिट्टी का waste था. मिट्टी से I started composting. पत्थर जो था, पत्थर I started separating that I'll give to a construction company जो उसको reuse करके सीमेंट या construction material में use करेगी. जो प्लास्टिक था उसको मैंने अलग separate करके clean करके recycle करने के लिए थोड़ा थोड़ा दिया. So this is the project that I have been working on for a while, that I want to clean that alley and I want to make it green. So it's not I'm not affiliated with any like cleanup organization. It's just my baby project that I have been like very religiously doing for a while. Wow, that's really wonderful, and that's so sweet of you कि you have put in your hands in cleaning your surroundings. जो हम हमेशा बोलते रहते हैं ना कि अपने surroundings को clean रखो and all those things. One more thing, Vidhi. Why I'm saying this, कि last year I had interviewed a 12-year-old girl. She has done some course on plastic, and now you are my second youngest, I must say. So whenever we talk of the eco-friendly talks, whenever we talk of sustainable living, हम हमेशा बात करते हैं our future generation, to make the planet a better place for them. And you people are, of course, the future generation. And if you people are carrying these kind of beautiful thoughts, I must really say kudos to you, because certainly इससे पता चलता है कि yes, you people are more aware about what is happening all around, rather than just following what the other teenagers are doing as of your age. I'm sure कि आप बाकी चीजें भी कर रही हैं, but I'm really glad कि you are so much aware that you are carrying out the channel, you are carrying out this awareness thing to make people more and more aware about how we can be, how we can live zero waste, how we can be vegan, how we can live sustainably with छोटी-छोटी सी choices, with छोटे-छोटे से conscious efforts. And this reminds me of a very simple quote by Jacques Cousteau, that water and air, the two essential elements on which all life depends, have become global
garbage cans, and that's the most sad thing why we have to do all these things, because यही दो चीजें इतनी ज्यादा polluted हो रही है that we are not realizing what harm we are giving. Yes. तो इससे मुझे याद आता है, totally agree. Yeah. Yes. आपने जैसे कहा कि आपके घर के पीछे एक alley थी which was dirty or whatever it needed an attention. तो ऐसे dumping grounds है, ऐसे alleys I'm sure बहुत जगह है. Tell me, living in you a... know, I'm so sorry to cut you off in the middle, but I was just saying I actually live very close to the, do you know the Bhalswa landfill in Delhi? Which Yes. is like, which comes in like one of the tallest landfills, or it's becoming one of the tallest landfills. I live very close to that place. Oh my So God. whenever my father takes us out for a drive, I actually see what all is happening. And at the moment, I'm seeing that the government is working on removing all of that trash and using it for construction of roads. But there are many people dying because of that landfill. So when people say कि trash से क्या कूड़ा ही तो है, उससे कुछ होगा नहीं? No. It can actually lower your life expectancy. That's how toxic this problem is. Of course, because उससे methane gases जो release हो रही है and the dumping Definitely. ground. Yeah. And I have seen कि okay truckloads daily निकल रही हैं, but that is I think not sufficient to clean that area. Ample of like garbage is piled up over there. Tell me, like अभी तक I was staying in Nilgiris and it was such a beautiful place which is plastic free and which is pollution free. But when we talk, my God, why did you leave that place? Come to Delhi, इतना गंदा air quality index रहता है एक तो हमारा यहाँ पे. Everybody has smoke. Back to me, Trashy. I completely agree and I can make out the difference. To be very frank, I am a Delhiite, but yeah, it's been years I have left Delhi, and returning to Delhi and seeing the state lately, I am myself really pissed off. इसीलिए मुझे ध्यान आता है कि when we talk of metropolitan city, छोटी cities में ये चीजें संभालना बहुत easy होता है, लेकिन when we talk of metropolitan, हमारे daily life में सुबह सुबह दूध का पैकेट आएगा, हम बिस्किट या ब्रेड ले जाएंगे, वो पॉलीपैक में आएगा. We claim कि yes, we should go and buy wholesale, but people are not doing it. They are not ready to, because everyone is busy. They are just on the run. दूध का पैकेट ले लेना है पर्सनल. So tell me कि metropolitan cities में when we see these kind of difficulties, जिसमें कि dry and wet segregation भी सब जगह नहीं हो पा रहा है, what is your observation or what is your take on that, or any suggestion which you would like to share with us? You know, one thing that you rightly pointed out कि लोगों के पास time नहीं है, इसलिए वो wholesale में सामान नहीं लेते हैं, they buy stuff in packets. Another reason is कि wholesale का market वगैरह यहाँ पे बहुत पास में है, क्योंकि यहाँ पे weekly markets लगते हैं ना, मंडे बाजार, संडे बाजार, तो wholesale का माल तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा. But the thing is, people avoid going and buying from those places as sanitary reasons. एक तो ये बहुत बड़ा reason है कि उनको लगता है कि adulteration होगी, polish कर रखा होगा, दालें वाले अगर आप loose में ले रहे हो तो polish कर रखा होगा, ये वो. Which I agree on some extent, क्योंकि यहाँ पे adulteration तो हर चीज में हो रहा है, packaged माल में भी हो रहा है और loose में तो और हो रहा है, I am very sure. But there are, धीरे-धीरे slowly, there are many businesses cropping up that actually have certifications of like sanitary certifications and then quality standards. They are meeting all those standards and selling stuff on wholesale. So just being aware of all of that can make a lot of difference. There is a very do you know the page Ullisu? She has started a package free map जिसमें she like pins every package free place in like pan India in all of the cities. So even like going to that map and just checking out all of the places near you that are selling stuff zero waste, selling stuff wholesale, that can make a difference. थोड़ा बहुत awareness is all that you need. And otherwise the thing is, once we realize कि हमको eco-friendly living start करना है, many people get overwhelmed by it कि सारा कूड़ा ना अभी घर से निकालना पड़ेगा. That's not possible. I think this is lifestyle for 5+ years and मैं भी अभी भी कूड़ा घर से निकलता है मेरे, थोड़ा बहुत तो निकलता है. There is stuff that you still can't recycle. So don't overwhelm yourself. Do the things that you can do. अगर आपको दूध का पैकेट वो उसमें ही लेना है, पैकेज ही लेना है, तो one good thing about दूध का पैकेट is that दूध का पैकेट is LDPE plastic, low density polyurethane something that can be recycled. तो अगर आप उसमें नहीं ले सकते तो वो पैकेट को धो के इकट्ठा करके रद्दी वाले को दे दो, रिसाइकलिंग दो. अगर रद्दी वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, there are many recycling agencies cropping up to take that and recycle it into new stuff.
So keep yourself aware. Don't like dismiss it. There are many options available now. When I started 5 years ago, yeah, there weren't many businesses as there are right now. 5 साल में बहुत change आया sustainability उसमें spectrum में. So just keep your eyes open. Follow some sustainability influencers like me, and just try to keep yourself aware. And just try to keep yourself aware of the things that are happening in your city. I am very sure कि आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. And at the very least, if you're not able to buy zero waste stuff, start recycling. True. Well said, Vidhi. मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा because this I experienced whenever I tell people about this eco-friendly choices on my podcast or my blog. So they're like, क्या करते हो तुम उसमें? So मैंने कहा I just try to make people aware. एक टिश्यू पेपर से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने कहा you don't realize that if you're carrying a handkerchief with you, or if you're carrying a towel with you, or if you're cleaning your table with a cloth, of course you are doing a lot, but वो नहीं समझना चाहते हैं. And metropolitan cities. मुझे I'm really feeling bad telling this, but in all these years मेरा सबसे ज्यादा कचरा अगर कहीं जनरेट हुआ है तो दिल्ली is one place जहाँ पे सबसे ज्यादा कचरा जनरेट हो रहा है. Because मैंने बोला you should go back to Nilgiris. I'm gonna come with you, to be honest. Because यहाँ हर चीज packed है and people find that packed is a standard. That is another thing. Like hygiene के आपने बोला, sanitization okay, still okay. But मैं कहती हूँ कि standard उसके साथ जब जोड़ देते हैं ना, that becomes a more problem. कि हमने अपने बचपन में अपने घरों में दादी नानियों को थोक में गेहूं चावल दाल लेते हुए देखा है. But still we just want for that organic का डब्बा लिखा हुआ या प्लास्टिक अच्छे से दो पैक किया हुआ. So I think maybe people are lured about the decorative things या जो बहुत अच्छे से पैक में रखा होगा. So that is again one problem, but good that you said this thing. So guys, even if you are in metropolitan, because मुझसे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि सिटी लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, आप समझते नहीं हो, रोज कहाँ लिफ्ट में and 14th floor से. So ऐसा नहीं है. You just have to be little aware, little conscious. There are groups in the societies, there are groups in the cities, there are groups in the localities who are either collecting your recycled bags, who are either collecting your milk packets, they are ready to collect your recycled bottles. So you just have to be aware. अपने trash can collector से पूछ सकते हैं आप, अपने कबाड़ी वाले से पूछ सकते हैं, गार्ड से. They are aware how things can be done. And इन सबसे पहले मैं सबको हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, because people are still not doing this, wet and dry उसको भी अलग करने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि why end up doing it. I really don't understand इतना मुश्किल क्यों लगता है. अभी आपने जैसे कहा कि your mom now gives you all the things which are हाथ के लिए, like we talk about compost, right? So I think composting, summers कहो, winters कहो, we eat fruits, we eat lots of vegetables. So ये चीजें तो हमारे यहाँ daily ही बनती हैं. Tell me composting के बारे में few things which I would just as a reminder I would like to again share with you. हम composting किस में कर सकते हैं? A tip from you, like you have been doing it regularly, and what all things you keep on adding on, like daily के stuff में से, just share with us. Acha, what are the stuff I add in my composter and where you make it? Like, these two things. Can we do it in a plastic balti, or we need something else, like something like this? Yeah. Okay, so to answer your first question, आप composting कहीं भी कर सकते हो literally. अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं है ना, अगर आपके पास एक छोटा सा डस्टबिन की जगह है तो आपके पास एक कंपोस्टर की भी जगह आराम से बन सकती है. You can compost in a ditch. Just like अगर आपके पास कोई गार्डन एरिया, गड्ढा खोद के उसमें अपना फूड वेस्ट डाल के ढक दो, कंपोस्ट बन जाएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. अदरवाइज अगर आप सिटीज में रहते हो तो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट सेल टीयर वाला कंपोस्टर, जिसमें 2-3 कंपोस्ट के डब्बे स्टैक कर रखे होते हैं एक के ऊपर एक. दैट सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस. यू कैन यूज दैट इन योर अर्बन एरियाज. अगर आप कोई सिटी में रहते हो, 14th फ्लोर पे रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप उसको रख सकते हो. इफ यू डू इट राइट, आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, आपको कोई कीड़े की पॉपुलेशन भी मॉडरेट ही रहेगी, बिकॉज यू नीड कीड़ास टू एक्चुअली हेल्प विद द कंपोस्टिंग प्रोसेस. True. So don't be squeamish of it, but if you do it right, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके कंपोस्टर से. I personally have 2 broken baltis at home, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा छेद कर दिया for aeration, ताकि हवा क्रॉस होती रहे मेरे कंपोस्टर में, and I compost in that. I have been composting in my 2 broken baltis for the past 4.5 or 5 years, I guess, ever since I started with the page.
एंड उसमें मैं क्या करती हूँ, मेरा सिस्टम ये है कि मैं फूड वेस्ट लेयर करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ, फिर एक और फूड वेस्ट की लेयर अगले दिन डालती हूँ, उसके ऊपर फिर अगले दिन मिट्टी डाल देती हूँ, तो मिट्टी फूड वेस्ट एंड देन वंस आई एम डन विद वन ऑफ द बाल्टीज आई स्टार्ट फिलिंग अप द अदर, बाय द टाइम द अदर वन फिल्स अप पहले वाला बन चुका होता है कॉम्पोस्ट। और अगर जब मेरा पहला वाला बन जाता है मैं उसमें एक मनी प्लांट गाड़ के, आई एम ट्राइंग टू मेक दैट एली ग्रीन, तो मैं मनी प्लांट गाड़ के आई जस्ट होप कि वो पत्ते उसमें इतने आ जाए कि मेरा मनी प्लांट, वो मेरा जो एली है वो जंगल जैसा बन जाए। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आपको अगर कुछ करना है, if you want to spend money तो you can buy these stack composters for your small apartments। उसमें बस आपको क्या करना है, कोकोपीट का एक लेयर डालना है, फूड वेस्ट का लेयर डालना है, कोकोपीट का लेयर, फूड वेस्ट का लेयर, ऐसे कर करके दे हैव अ वेरी इजी इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑल्सो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंपोस्टिंग आराम से हो जाएगा। द अदर थिंग दैट यू आस्क्ड मी वाज कि मेरे घर से क्या निकलता है, राइट? ओके, मेरे घर से वही फ्रूट के छिलके निकलते हैं, वेजिटेबल पील्स निकलते हैं, सीड्स निकलता है, चाय पत्ती निकलता है। सो जो लेमन के पील्स होते हैं, आई सेग्रीगेट दैट एंड कीप दैट इन माय फ्रीजर टू मेक दिस होममेड पोछा क्लीनर। अदर देन दैट जो भी मेरा फूड वेस्ट वगैरह होता है उसका मैं खाद बनाती हूँ। तो कोई भी फूड वेस्ट, किचन में आपका जो भी माल निकलता है वो सारा, मोस्ट ऑफ इट कैन बी कॉम्पोस्टेड। यू कैन ऑल्सो एड पेपर, यूज्ड टिश्यूज, अगर कोई आपका खाना खराब हो गया था फ्रिज में पड़े पड़े, यू कैन ऐड दैट टू, यू कैन ऐड योर हेयर, यू कैन ऐड योर नेल्स ऑल्सो, कटे हुए नेल्स लाइक ट्रिम नेल्स। That's really great, good, because मुझे हेयर के बारे में किसी ने बहुत टाइम पहले पूछा था। Glad you shared this. So guys, आप मेरे को बहुत अच्छी लाइन लगी विधि ने जो अभी बोला, किचन का माल। So guys, किचन के कचरे मत समझिए, इट इज एक्चुअली अ माल। यू जस्ट हर्ड हर। आप फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, जो भी हमारे निकल रहे, इवन बचा हुआ खाना, आइटम्स, गर्मियां हैं, खाना खराब हो जाता है, कोई चीज पुरानी हो जाती है, यू डोंट हैव बर्ड्स और काउज और डॉग्स नियर बाय, सो प्लीज पुट इट इन द कंपोस्टिंग बिन। एंड कंपोस्टिंग बिन बहुत बड़ी चीज नहीं है, जहां आप अपना एक छोटा सा प्यारा सा गमला रख रहे हैं, बस उसी के बाजू में एक छोटी सी बाल्टी, या द वे शी सेड अबाउट द टीयर, यू कैन कीप दैट। एंड गाइस, द वे शी वाज जस्ट नाउ शेयरिंग ऑल दिस इन्फो, you can just tune into her YouTube or Instagram channel. Once again, the name of which is Trashy Sisters, and she has been sharing these kind of videos a lot on her Insta page. So just please follow her and try and bring that little change in your life for a sustainable tomorrow. So Vidhi, आपने इस सब के साथ अभी अभी एक जिक्र किया छोटा सा, नींबू एंड बायो एंजाइम का, वो भी बताइए। You are very very observant. What is that about? Okay, so there is this cleaning solution जो इंडिया में, I am very proud of this because ये इंडिया ने बनाया था। There is lot about the zero waste movement that has been inspired from the West, जबकि हम लोग पहले सस्टेनेबल थे, हमारे परदादी और हम, हम पहले सस्टेनेबल थे, बट जस्ट बिकॉज वेस्टर्न कल्चर ने उसको थोड़ा ब्यूटिफाई कर दिया, दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड इट। बट बायो एंजाइम इज समथिंग दैट गॉट पॉपुलर बिकॉज ऑफ इंडियंस, वो यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। इट्स अ क्लीनिंग सोल्यूशन दैट यू मेक फ्रॉम वेस्ट, यू मेक फ्रॉम ट्रैश, यू मेक इट फॉर लाइक नेक्स्ट टू नथिंग। फॉर दैट इट्स कॉल्ड बायो एंजाइम, और आप उसको एक प्लास्टिक की बॉटल में बनाते हो, तो आपका प्लास्टिक का कूड़ा भी रीयूज हो जाता है उससे। एक प्लास्टिक की बॉटल में आपको नींबू के छिलके, पीपल मेक इट फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ छिलकास लाइक पाइनएप्पल, नींबू, ऑरेंज, मैंगो, व्हाटएवर। आई पर्सनली मेक इट फ्रॉम लेमन का छिलका बिकॉज इट्स वेरी एसिडिक and helps in cleaning. It's very citrusy. So I use नींबू का छिलका प्लस जैगरी प्लस पानी। इसको 3:1:10 के रेशियो में आपको एक प्लास्टिक की बोतल में बंद करके 3 महीने के लिए रखना होता है। 3 महीने के बाद आपका एक बहुत ही बढ़िया एसिडिक विनिगरी सोल्यूशन बन जाता है, जिससे आप पोछा लगा सकते हो। यू कैन क्लीन योर ड्रेन्स विद इट। इट्स ऑल्सो यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, तो आप अपने प्लांट्स में भी उसको डाइल्यूट करके छिड़क सकते हो। सम पीपल हैव क्लेम दैट इट हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स ऑल्सो। There was a disease rampant among cows called lumpy. तो lumpy के टाइम पे bioenzyme लगा रहे थे cows के ऊपर, and it kind of worked. There's still a lot of research left on it, but it kind of worked as that also, as an antiseptic. Wow. Some people wash their hair with it, some people take an entire bath with it. It's like a 50-in-1 multi-purpose cleaning solution that you make for like free, to be honest. And wow. I have been using it for ages. मैं 5-5, 10-10 लीटर हमें हर महीने निकालती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ मेरे नींबू के छिलकों से। So yeah, it's another thing that you can do at home that's gonna save you money. And it also जब वो ड्रेन्स में रिलीज होता है, जब आप उसको अपने ड्रेन में डालते हो, it actually purifies the water. So it's like liquid gold that you can make at home.
वंडरफुल विधि, आपने लास्ट अभी 2 मिनट में जितनी चीजें शेयर की है दे आर रियली रियली इंफॉर्मेटिव, बिकॉज फर्स्टली आपने हम सबको ये बताया कि यस दिस बायो एंजाइम वाज प्रोड्यूस और इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया. सेकेंडली, Yeah. ग्लैड यू कॉल्ड इट लिक्विड गोल्ड, बिकॉज लोग इसे क्या समझते हैं कि कुछ सड़ी हुई सी चीज हमने बॉटल्स में रखी है. बिकॉज आई हैव सीन द रिएक्शन ऑन पीपल्स फेस व्हेनेवर दे सी माय बॉटल्स दैट वाई इसके अंदर तो बहुत अजीब सा दिखाई दे रहा है, हाउ डू यू यूज इट, Yeah. चींटियां नहीं आ जाती, Hmm. मक्खियां नहीं आती. मेरा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल इन योर माइंड, सो इट्स नॉट लाइक दैट. एंड Yeah. ग्रेट दैट यू शेयर्ड सो मेनी मल्टी यूजेस ऑफ इट. सच कहूं मुझे भी ये सारे यूजेस नहीं पता थे. लाइक वॉशिंग योर सेल्फ एंड योर हेयर, ये मुझे सच में नहीं पता था. ग्लैड यू शेयर्ड इट. There are actually some YouTubers who add Rita to it and use it as a shampoo. So yeah, it's tried and tested. लोग shampoo की तरह भी इसको use करते हैं. Wow, that's really great. So guys, आपके like again I will say विधि ने जैसे कहा था, आपके किचन का माल सच में माल है. You can use it for like your hair, your skin, and not only this, आपके घर के लिए आपको बहुत strong phenyls या chemicals लेने की जरूरत नहीं है. आप अपने ही घर में इन citrus fruits के leftovers से you can make this bioenzyme, and I'm sure इसकी fragrance भी बहुत अच्छी रहती होगी since all the citrus fruits are there. So really, Yeah, exactly. wonderful that you shared this journey of liquid gold. I must say that was really wonderful. Okay, moving ahead. Oh, Yeah. I'm so sorry. I wanted to add one point. You just mentioned कि आपको लोग टोकते हैं कि चींटियां तो नहीं आती होंगी उसमें क्योंकि आप जैगरी गुड़ डालते हो उसमें. Right. The thing is that good is actually eaten by the microorganisms in that bioenzyme. तो वो फूड है किसी के लिए, तो वो चींटियों के लिए नहीं छोड़ते. चींटियों के लिए फूड नहीं है. It's the food for the yeast and the microbes in that bioenzyme. तो चींटी नहीं आएगी if you make it right. Great, great, great. So guys, I hope you just understood कि जैगरी डालने से वो कोई मिठाई नहीं बन गई है. Actually, it is a food for those microbes, and it is very safe and very good to use this bioenzyme within your house. Just try it out, guys. Many people are these days using it. Please don't just go and buy those chemicals which you don't realize, which we are just pouring it away down the drain, which is now lining up in the landfills, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा harmful है, हम नहीं realize करते हैं. Instead, try and make this bioenzyme within your house. आपके घर में नींबू का रस आप निकालते होंगे, orange juice निकालते होंगे, and there are a lot of citrus fruits which we are using daily. Great, great, great. Okay, विधि. So moving ahead, आपने हमें आज कंपोस्टिंग के बारे में बताया, आपने आज हमें लिक्विड गोल्ड यानी कि एक बायो एंजाइम बनाने के बारे में भी बताया, which is a cleaning product. Moving ahead, I have heard a lot about your face wash. Face wash? Really? Wow. What is this face wash? Like you are making your own face wash? Please throw light on that. Please first tell me कहाँ सुना था. कहाँ सुना था आपने मेरे face. I'm intrigued. आपका इंटरव्यू लेने से पहले आपका इंस्टाग्राम छानना पड़ा, आपका यूट्यूब छानना पड़ा. So yes, I stumbled upon that somewhere. So the thing is, this is mummy's idea. Mummy actually got us into washing our face with besan. So she tried that for years. कि हमारे bathroom में ना, whenever I would wake up and go to the bathroom, रोज तो नहीं, every once in a while, वो एक कटोरा पड़ा होता था, या तो उसमें मुल्तानी मिट्टी होगी या फिर उसमें चावल का आटा का कुछ पेस्ट बना रखा होगा, या तो बेसन का कुछ होगा या हल्दी का कुछ होगा. So when I started with the zero waste thing, eventually I thought कि फेस वॉश की, क्योंकि फेस वॉश का मुझे ढंग का अल्टरनेटिव मिल भी नहीं रहा था, मैं कहा छोड़ो, मम्मी जो इतना बनाती रहती है घर में फेस वॉश, मैं वही क्यों नहीं यूज कर लेती. एंड आई ट्राइड इट 2 years ago and I have been using it ever since. देखो मेरे स्किन को कुछ भी नहीं हुआ है. And I love it. It's not, obviously I have never consulted a dermatologist, so if you're scared about that, obviously talk to them first before you do this. But for me and my sister and my entire family, we don't buy face wash anymore because this is what we use. We just pour besan in our palm, a little bit of it, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बस उसका फेस बना के लगा लेते हैं मुंह पे. इफ यू वांट लाइक डीप क्लीन तो फिर लगा के थोड़ा सा ड्राई करने के बाद वॉश इट ऑफ, ताकि वो थोड़ा ड्राई होके जर्म्स भी खींच के, ऑयल खींच के निकाल दे, अच्छे से क्लीन हो जाए आपका स्किन. And if you really want to make a scrub, my mother keeps a small bottle of चावल का आटा in the bathroom all the time. अगर आपको थोड़ा scrubbing करना है तो you can use that because it's slightly more abrasive than besan. But for regular use, besan, I just wash my face with besan. I don't have a recipe. It's just besan in a bottle. That's it. Wow. विधि, आपसे बात करके ना मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है that you are a
क्या कहना चाहिए 21st जनरेशन की टीनेजर, बिकॉज मेनी टीनेजर्स whom I stumbled upon they are very picky about फेस वॉश में ये होना चाहिए, फेस वॉश में वो होना चाहिए, एक्ने कंट्रोल वाला लेना, ये वाला मास्क लेना, वो एंड दिस बेसन इज वंडर। आई नो बिकॉज बचपन से और डेली यूज होना हो, बट ठंड में दिवाली पे इट्स अ मस्ट ऑन इन एवरी हाउस होल्ड की बेसन का लेप विद अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी इन इट एंड आइदर जैसे आपने कहा दिवाली पे I had no idea, थोड़ा बताओगे आप प्लीज? या दिवाली पे एक्चुअली इन महाराष्ट्रियन कस्टम व्हाट इट इज कि दिवाली वाले दिन अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू टेक दैट अभ्यंग स्नान। तो उसमें आपको बेसन में हल्दी, यू कैन यूज अ लिटिल बिट ऑफ मलाई और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ तेल एंड होल फैमिली पुट्स इट ऑन द होल बॉडी। It's like instead of using anything else, we prefer using this. उसके बाद उसका एक upper version आने लगा था when I started growing up, that मोती स्नान, if I have heard about that soap bar जो बहुत famous हुआ करता था. So this is how I think things started turning into कि soap में बदल गया, soap से wash में आ गया, but बेसन का कोई तोड़ नहीं है. This I will agree, and not only जैसे आपने भी चावल के आटे का जिक्र किया, ये जो आटे का चोकर होता है, I've heard that is also a very good thing for your face. And guys, ये सारी naturally available चीजें हैं, rather than going in for any chemical that can harm your body. But I'm sure ये सब तो शायद कुछ भी harm नहीं करेगा. So glad to know that you have been using it and आप अपनी मम्मी की बात सुनते आए हो. That's really lovely of you. And guys, of course, right now I'm talking to Vidya and I can see the glow on her face. It's not only marketing stuff, but yes, she has been using it and she has to prove that this is really a great thing कि आप अपने ही घर की चीजों को फेस वॉश बना सकते हैं, अपनी ही घर की वेस्ट से आप एक बायो एंजाइम, एक अच्छा क्लीनर बना सकते हैं, अपनी ही घर के वेस्ट से आप कंपोस्ट बना सकते हैं. सो इफ वी सी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि गार्बेज कैन है, गार्बेज कैन नॉट नहीं है, इन द सेम वे इट सेज कि वेस्ट isn't a waste until we waste it. We can certainly utilize the waste, we can reuse it, we can recycle it, we can find ways to I think उसको उपयोगी बनाने के लिए हम तरीके ढूंढ सकते हैं, जिससे कि लैंडफिल्स में जो पाइलअप होता है वो थोड़ा कम हो. एंड मैं अपने हर एपिसोड में ये चीज जरूर रिपीट करती हूँ कि गाइस, आप जब ये कचरा कचरे के डब्बे में डालते हैं, उस काली सी पॉलिथीन को गांठ लगाते हैं, प्लीज उससे पहले एक बार सोचिए क्या उसमें ऐसा कोई कचरा है जिसे हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए रीयूज कर सकते हैं, rather than just बंडल अप किया एंड थ्रो कर दिया. सो आपको नहीं समझ में आता कि कचरे वाला तो जो कचरा ले जाता है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ दैट जर्नी जो लैंडफिल्स में जाके पाइलअप होती है. लाइक थोड़ी देर पहले जैसे विदि ने जिक्र किया कि दिल्ली में सिर्फ ये एक ही नहीं, इस तरह के 4 डंपिंग ग्राउंड्स हो गए. नॉट ओनली दिल्ली, आई एम श्योर इंडिया में बहुत जगह इस तरह के पाइलिंग ग्राउंड बढ़ते जा रहे हैं. इफ वी आर नॉट बीइंग कॉन्शियस, इफ वी आर नॉट बीइंग अवेयर ऑफ आवर ओन वेस्ट, ये ग्राउंड सिर्फ बढ़ते जाएंगे. बिकॉज इसका इलाज सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसका इलाज हमें खुद ही बनना पड़ेगा. सो ग्रेट विधि, मतलब कॉस्मेटिक भी हो गया, बायोएंजाइम भी बन गया, कंपोस्टिंग भी बन गया, और क्या बचा? अच्छा, वेस्ट जनरेट होता है जब हम कुछ कंज्यूम करते हैं. तो कंज्यूम से मुझे याद आया, Vidhi is a vegan. Now, what is this vegan journey? Okay, just to clarify, I am not a vegan. I am trying to become one. It's just that because of health reasons, I have to give up on that lifestyle every now and then. But yes, I very wholeheartedly advocate veganism because I believe in that. I believe that our diet should be cruelty free, and that we are living in the 21st century and we should still not depend on animals for nutrition. And you know, there are many like advances in science that are helping us develop alternatives for like things like vitamin B12 जो आराम से नहीं मिल जाता vegan diet में. So yeah, we should explore more of that so that we don't harm innocent animals. So yes, I do advocate that, but I am still learning how to become a perfect vegan, and it's challenging, but yes, I am still on that journey. Yes. So when you say it's challenging, how difficult? Like difficult in the sense, आपको घर में इसको लेकर मुश्किलें आती है कि when you step out of the house तब आपको मुश्किल लगता है? Like what you felt when you try कि okay मुझे आज ये करना है. So what are the difficulties that you are finding coming in? Okay, so initially जब initially मैंने start किया था, it kind of started parallel with my zero waste journey also. So it started like 4 or 5 years back.
उस टाइम क्या होता था कि ज्यादा वीगन ऑल्टरनेटिव्स चीजों के थे भी नहीं आसपास, जैसे वीगन बटर वगैरह जो अब मिलने लगा है वो उस टाइम इतने आसानी से नहीं मिलता था या तो बहुत एक्सपेंसिव था। तो उस टाइम चैलेंज ये था कि घर में बहुत कुछ बनाना पड़ता था। दैट वाज अ बिग इशू कि हर जब देखो हर चीज के लिए किचन में जाना पड़ता था कि हर एक तो प्रॉब्लम इज हर चीज में कुछ ना कुछ एनिमल इंग्रेडिएंट है। नथिंग इज लाइक प्योर वीगन। आप थोड़ा चॉकलेट को भी ढूंढोगे नीचे कहीं पे लिखा होगा मे कंटेन मिल्क, मिल्क सॉलिड्स है इसमें, हर चीज में दूध डाल देते हैं। सो या इट वाज अ बिग चैलेंज क्योंकि उस टाइम दे वांट इनफ ब्रांड्स दैट वर मेकिंग वीगन प्रोडक्ट्स, तो घर में बहुत कुछ बनाना पड़ता था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फाइंडिंग डिफरेंट ब्रांड्स, जैसे आई हैव व्हाइट कप करके बहुत फेमस दिल्ली ब्रांड है जो वीगन दही, वीगन दूध, वीगन आइसक्रीम वगैरह बनाती है, वेरी गुड। वीगन बटर आल्सो, आई बाय देयर बटर फ्रीक्वेंटली। अब ये आ गए। नाउ द थिंग वाज still somehow my diet was a little restrictive that I became extremely deficient in vitamin B12 and D and E. ये तीनों चीजें मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी, even though I was like paying attention to all my like diet chart and nutrition profile and everything. It wasn't like I wasn't meeting all the requirements and I got sick I think twice. तो इसलिए now my goal is कि जब मैं जंक फूड खाती हूँ तो वो मैं वीगन ही खाती हूँ। मेरा जंक फूड तो वीगन ही रहता है। डेली फूड में मम्मी दाल वाल बनाती है, रोटी बनाती है, वो सारा तो ऑलरेडी वीगन होता है। बीच बीच में दही आई नीड टू हैव बिकॉज माय डॉक्टर हैज आस्क्ड मी टू, बट अदर देन दैट द थिंग दैट आई डू राइट नाउ इज अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं मोस्टली जंक फूड वीगन ही खाती हूँ। घर में आई स्टिल समटाइम्स मेक माई वीगन मिल्क। मेरे को कभी कभी डेयरी मिल्क से उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है, बट यस माई फेवरेट इज कैशू मिल्क। आई मेक दैट फ्रीक्वेंटली एंड आई लव ड्रिंकिंग इट। अपार्ट फ्रॉम दैट घर में अगर केक वगैरह बनाती हूँ वो सारा मैं वीगन बनाती हूँ। सो जंक फूड सारा मेरा वीगन रहता है। थोड़ा थोड़ा चीजें लाइक दही एंड वंस इन अ वाइल दूध आई नीड टू हैव बिकॉज ऑफ डॉक्टर रिकमेंडेशन, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन फाइंडिंग बेटर ऑल्टरनेटिव्स टू दैट बिकॉज आई स्टिल even though I got sick, I still believe in this कि हमको एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए हमारी डाइट के लिए। So sweet. That's really wonderful. And दीदी आपने जिस तरह से अभी कहा कि of course cruelty free, ये thought I really wish आप vegan हो चाहे ना हो, but ये thought आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है कि animals की तरफ cruelty नहीं होनी चाहिए। Harming them या troubling them in any way is really not a very great deed which we people are doing. So आप vegan हो चाहे नहीं, कोशिश of course करें, but अगर आप नहीं है cruelty free living की तरफ आपकी सोच जरूर होनी चाहिए। And टीनेजर के मुंह से मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगा कि आपका जंक फूड वीगन होता है। That's really wonderful because जंक फूड। अच्छा, I need to ask you, do I because मेरा ना थोड़ा ईगो बूस्ट हो रहा है, मैं सच में टीनेजर ही लग रही हूँ क्या? Because I am 25. Guys, I'll be sharing her picture in my podcast का blog post and you can see she is really bubbly looking, beautiful teenager from the metropolitan of India. And of course मुझे बहुत अच्छा लगा because जंक फूड बोलते ही ना दिमाग में बर्गर पिज्जा ये सब आता है। When you say कि जंक फूड ही वीगन होता है तो मैंने कहा okay, now this is so great. I'm really wishing you best of luck while you're marching on this journey. I hope you'll be successful, of course. And Vidhi, talking to you was really, really informating, really wonderful, and बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं बार बार ये बात स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ because so far मैंने अभी तक 2 या 3 teenagers के साथ इंटरव्यू किया है। Other people have been either associated with some organization or they have themselves started with some entrepreneurship or they are doing it since like 10-15 years. But yes, you people who are future generation of India, the so-called, जिनके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि this earth should be green and clean. I am really glad कि you carry such beautiful eco-friendly thoughts, and thanks for sharing your bioenzyme journey, your composting journey, and the face wash thing. Everything what you shared, इससे एक बहुत ही simple सी चीज सबको समझ में आनी चाहिए कि हमारे घर की हर छोटी छोटी चीज, हमारे डेली यूज की हर छोटी चीज is very, very useful, which can be put to a better use with a little awareness, with a little consciousness, and with a little eco-friendly thought. And glad with you. Really nice talking to you. बहुत अच्छा लगा. Thank you so much, Prachi. Usually when I do these live sessions, तो मेरे पे सवाल फेंके जाते हैं और फिर मुझे जवाब देना होता है. So I am always like in this defense mode कि क्वेश्चन आया, I need to answer it very quickly. This was the first time when even the
interviewer was so like conversational and interacting and giving her own thoughts, and I loved that. That was the first time. Then I really had fun. When the meeting ended, all of a sudden in the middle, I was like, shit, khatam ho gaya. No, we can come up with more. I'm just always looking for the topics for eco-friendly awareness. तो जब भी हमारे पास कोई अच्छा सा topic होगा, तो let's come together and let's spread this awareness as much as we can. Yeah, sure. Wind up, guys. विधि की पूरी talk से मुझे एक quote बहुत अच्छा सा याद आता है. बहुत ही simple सा quote है. Reuse the past. Like विधि ने अपनी कई चीजों में इस चीज का जिक्र किया कि जैसे हमारे पहले टाइम में होता चला आता था. So reuse the past. Recycle the present. Whatever is around us in the present can be recycled. हमें बस थोड़ा सा aware होने की जरूरत है. So reuse the past, recycle the present, and save the future. Go green, guys. So on this thought, Vidhi, thank you very much. Once again, best of luck to the Instagram page and YouTube page and whatever initiatives you are carrying under the name of Trashy Sisters, guys. Do check their Insta page and YouTube channel. They have been sharing really wonderful stuff on it, on all the things like she shared today also, composting ho, chahe eco-friendly living ho, zero waste ho, whatever. She has been sharing such beautiful and lovely videos जो कि बहुत ही interactive और बहुत ही bubbly से लगते हैं. They are not boring stuff, I'm telling you again. So go check Trashy Sisters. And once again, thank you, Vidhi, for your time. Guys, thank you. That's all for today. Panchatatwa Girl will be back with more inspiring, motivating and green living stories. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने वेस्ट को रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए. जस्ट ट्राई व्हाट यू कैन डू विद व्हाट यू आर पुटिंग इनटू द डस्टबिन. डालने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि क्या मैं इसको कहीं ना कहीं रीयूज या रिसाइकिल कर सकता या कर सकती हूँ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. बाय बाय. नमस्कार.